बात कर रहे हैं कनाडा में किताब पढ़ने के कल्चर के हवाले से। किताब के वजूद को और जो किताब से तल्लक है, दोस्ती है, उसको टेन किया जाए, लोगों को किताब से जोड़ के रखा जाए। कोई 642 पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं और उनकी 3,350 ब्रांचेज़ हैं। 33% जो आबादी है कनाडा की, वो इस्तेफ़ादा करती है इन लाइब्रेरी से। टोरंटो में सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी ये 1830 में कायम हुई थी। जीटीए के एरिया में कोई 100 ब्रांचेज़ हैं और तकरीबन इनके पास 26 मिलियन बुक्स और सहूलियात हैं। 1971 में बर्टन ने ये बुक स्टोर टेक ओवर किया था। किराए पे किताबें या इस तरह के कॉमिक्स का दौर था तो उन दिनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद एजाज गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कनाडा से आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाजिर हैं। आज हम बात कर रहे हैं कनाडा में किताब पढ़ने के कल्चर के हवाले से। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बावजूद कि यहाँ बहुत सारे लोग डिजिटल मीडिया और जो गैजेट्स आ गए हैं उससे उनकी लाइफ चेंज हुई है, उनकी तवज्जो उस तरफ गई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जो किताब पढ़ने का कल्चर है वो कितना मजबूत है। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट का और जो पब्लिशिंग के ज़िम्मेदार लोग हैं वो किस तरह से मेहनत करते हैं कि किताब के वजूद को और जो किताब से तल्लक है, दोस्ती है, उसको रिटेन किया जाए और लोगों को किताब से जोड़ के रखा जाए। अब अगर आप अदाद शुमार देखें तो कनाडा में कोई 642 पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं और उनकी 3,350 ब्रांचेज़ हैं और तकरीबन अंदाज़ा लगाया गया है कि कुछ 33% जो आबादी है कनाडा की, वो इस्तेफ़ादा करती है इन लाइब्रेरी से और 10 लाख अफराद सालाना लाइब्रेरी विज़िट करते हैं। टोरंटो में सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है और ये 1830 में कायम हुई थी और इसकी अब जीटीए के एरिया में कोई 100 ब्रांचेज़ हैं और तकरीबन इनके पास अगर देखा जाए तो 26 मिलियन बुक्स और दीगर जो पढ़ने की गैजेट्स हैं या सहूलियात हैं वो मौजूद हैं। इन सारी बुक्स और लाइब्रेरी के वजूद के बावजूद कनाडा में यूज्ड बुक्स के जो स्टोर्स हैं वो भी जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों में कोरोना के स्पेशली दिनों में और उसके बाद पेश आने वाले हालात के बाद इनमें कमी वाक़या हुई है और कुछ ने तो कारोबार बंद कर दिया है, लेकिन कुछ जो हैं वो ऑनलाइन चले गए होंगे। तो हमारी एक ऐसे ही बुक स्टोर के मालिक से बात हुई है। बर्टन उनका नाम है, ये विनिपेग में है और ये 1971 में ये बुक स्टोर इन्होंने टेक ओवर किया था किसी ऐसे शख्स से जो इसी इलाके में स्ट्रीट के ऊपर सोच रहा था कि स्टोर को बंद कर दे। तो बर्टन जो है ये खुद 1971 में नौजवान थे और उन बेरोज़गार थे, तो किसी ने बताया कि वो शख्स जो है वो स्टोर बेच रहा है, तो आप उनसे बात करें। तो कह रहे हैं मैंने हिम्मत की, उनको कहा और वो स्टोर मैंने ले लिया। तो बहुत छोटा स्टोर था, किराए पे किताबें या इस तरह के कॉमिक्स का दौर था तो उन दिनों। तो इनका कहना है कि मुझे ख़दशा था कि पता नहीं मैं इसका किराया भी दे पाऊँगा कि नहीं, लेकिन कह रहा है कि मेरी किस्मत देखें कि पहले ही महीने में किराया देने में कामयाब हो गया। इस तरह की मेरी इनकम हुई। बर्टन ने मेरे इस सवाल को बेसिकली रद्द कर दिया कि ये कह कर के क्या डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की जो एक्सपेंशन है उसकी वजह से किताब की जो रीडिंग है और किताब जो दोस्त लोग हैं, क्या उनमें कमी वाक़या हो जाएगी? उन्होंने कहा जी, जब मैंने 1971 में जब ये 50-52 साल पहले इस स्टोर को मैंने शुरू किया था, तो तब भी ये बात होती रही
اور یہ زیر بحث تھی کہ کیا کتاب جو ہے آنے والے سالوں میں اس کی اہمیت کم ہو جائے گی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی 50 سال بعد بھی کتاب کی اہمیت اسی طرح ہے۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کتاب کی اہمیت کبھی بھی کم ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی یہ کر رہا تھا کاروبار، اور آج اس سے بہتر انداز میں کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے پاس تقریباً 1 لاکھ بکس ہیں، اور ان میں بڑے لمیٹڈ ایڈیشن ہیں اور بڑی نادر اور نایاب کتب بھی رکھی ہیں جن کی قیمت ہزاروں ڈالر میں ہے، کیونکہ بعض ایسی نادر کتب ہیں جن کے لمیٹڈ ایڈیشن ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ اور 1 لاکھ کتب کو وہ اب مینج اس طرح کر رہے ہیں کہ آن لائن سیل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اراؤنڈ دا گلوب لوگ ہم سے پرچیز کر رہے ہیں، اور اس لیے چونکہ کرونا میں گورنمنٹ نے ان کی ہیلپ کی، اسٹور بند تھا، اور فائنلی یہ ہوا کہ آج کل وہ ہفتے کے دن اسٹور اوپن کرتے ہیں، اور باقی دنوں میں جتنے بھی آن لائن آرڈر ہوتے ہیں وہ کتابیں سیل کرتے ہیں، اور ایک اچھا بزنس چلا رہے ہیں۔ اور توقع انہوں نے یہی کی کہ آئندہ 50 سال تک بھی یہ کاروبار چل سکتا ہے، کیونکہ کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے خاص طور پہ اپنے بارے میں بتایا کہ میں بہت کتابیں اس کاروبار کے حوالے سے میں رہتے ہوئے، کہہ رہے ہیں ان کی بیگم جو ہے وہ بھی بہت کتابیں پڑھتی ہے، لیکن افسوس کا اظہار کیا کہ یہ ان کی فیملی کا کوئی اور فرد اس کاروبار کو اب شاید نہ سنبھالیں، کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب میں ایک ریٹائرمنٹ کی ایج میں آ گیا ہوں، تو بچے اس طرف نہیں آ رہے۔ تو بیسیکلی ان کے ساتھ ایک خاتون ہے، وہ پارٹنر ہے ان کا، جن کا نام کیرن ہے۔ تو یہ دونوں مل کے یہ کاروبار چلا رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں، اور کتاب کی جو مستقبل میں اہمیت ہے اس کے بارے میں یقین بھی رکھتے ہیں اور پر امید بھی ہے۔ تو آئیے ایک بات چیت ہم نے ان کے ساتھ کی ہے، جس پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈسکرائب کی ہیں، اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، لیکن چلیں ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی برٹن لیوس کی بکس ہے، یہ اسٹور ہے، ہاؤس بورن کے اوپر ونیپیگ میں ہے۔ تو ان کا ویب سائٹ بھی ہے، اور یہ آن لائن کتابیں سیل کرتے ہیں، ان کا کیٹلاگ ہے۔ تو کینیڈا میں کتاب کلچر کے حوالے سے جو یوزڈ بک اسٹور ہیں ان کا بھی بڑا اہم رول ہے، تو اس بارے میں ہم نے یہ ایک بات چیت کی ہے۔ تو آئیے برٹن سے بات کرتے ہیں۔ How you are like a book buddy, and you started this store as a business? Well, I Or bought the store as a going concern. Somebody started it a little over 50 years ago, just down the street, and I was unemployed at the time, and I had nothing in my mind, and I was running out of unemployment insurance. So a friend of mine suggested, well, maybe you should go and talk to this guy that's running this bookstore. He's only operating it on Saturdays, and maybe he would hire you to sit there in the store during the week. So I went and talked to him, and it turned out that he was not really interested in continuing with it. As a matter of fact, he was likely going to shut it down. So I talked to him. I said, well, how about if I bought the store from you? And he says, sure. So we ended up making a deal, and I bought the store. And as far as I was concerned, all I was looking for out of the store was, could I pay my rent in the first month? And well, it turned out I did pay my rent in the first month, and here we are 52 years later. Okay. So how much number of books were there in the store when you bought it? Well, when I bought it, essentially it was 214 square feet. Okay. And there's a picture of the old store right there, that Okay. photograph right there on the Okay. wall. And what it was a very tiny area. We had tents with paperback racks on it. Oh, okay. And
it was mainly paperbacks. Uh, there were collectors' comics. This was one of the first stores in Winnipeg to sell collectors' comics. This was in 1971. And then we had, what else? There were a few hardcover books in the center area on bookshelves. And it was a scattered collection of odds and sods, and none of it in very good condition, and likely none of it really very well selected. So over the years, what I did was I started weeding out the collection, and got really fussy about the condition of books. And then over the years, I started learning what books were worth having and what books were very common and not worth having. And in that period of time, what I did was that I improved the stock and appearance of the store, and so now you have what we have here. We have a store of about 3,000 square feet of retail space with about 100,000 books in it. 100,000 books. That's great. You talk about the comics books. Yeah. So there was a kids like Well, that was for customers? kids. We used to buy comic books for 2 cents each and trade them and sell them for 8 cents each, and we would trade them 2 for 1. That's what it was. And then somebody else came along and he started paying 5 cents each for comics, and so then the comic wars began. But another big thing in the 70s was Harlequin romances. Ladies would come into the store with 2 great big Safeway shopping bags full of Harlequins, and they would come in and trade for. They would take out 1 shopping bag full of Harlequins. And they'd be very, very careful not to spend any money. So there wasn't really much money in that, so it didn't take me too long to figure out that I had to do something about that, so that there was actually a little bit of money that came across the counter too. So we did solve that over time. And so that was the big thing: Harlequins and comic books and paperbacks. And paperbacks. That's the main source of your customers and. The second-hand book business, the second-hand business. So you buy books? Buy, sell, and trade. That was okay. that was the motto for most all books. All second-hand books was buy, sell, and trade. So you come to the store, you offer them for sale. If I like them, I'll buy them. If I don't, I won't. Okay. So. And you could also trade them. So you can trade. So you wouldn't have to. I wouldn't have to give you money. I'd be happy to give you books instead of money. Okay. So you it's get a trade. You get half of your value back in books.